Hi guys, today our topic is talking on mobile phone means mobile पर बातचीत करना. First of all, I want to say that the right pronunciation of mobile is mobile phone. This is not mobile. Okay, in English you will say mobile phone. And how to make a call in English? Let's study and read in this video. First of all, for making a call, you can say, "Who is this?" When you receive a call, you can ask, "Who's speaking?" Who's speaking is who is short form of who is. तो आप इसे कह सकते हैं कौन है या कौन बात कर रहा है. In answer your friend or who is speaking on other side, that person can say, "This is Ali, an old friend of yours." मीन्स कि अली बात कर रहा हूँ या आपका पुराना दोस्त. यहाँ पर आप अपना नेम भी यूज़ कर सकते हैं. सो ऑन टेलिंग योर नेम, जब आप अपना नेम बता देंगे तो आप नेक्स्ट में कह सकते हैं ओ आई सी. ओ, अब मैं समझा. मीन्स जब आप किसी को पहचान जाएंगे देन यू विल से ओ आई सी. हाउ डिड यू मेक अ कॉल मीन्स कि आपने कॉल कैसे की. तो नेक्स्ट इन आंसर यू कैन से नथिंग सीरियस, आई वॉज प्लानिंग टू मीट यू. कुछ खास बात नहीं है, बस मैं आपसे मिलने का सोच रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क शैल वी मीट टुडे मीन्स कि क्या आज हम मिलेंगे या आज हम मिल सकते हैं. यू कैन ऑल्सो से कैन वी मीट टुडे एंड शैल वी मीट टुडे, बोथ आर राइट. आफ्टर दैट इन आंसर यू कैन से ओ नॉट टुडे, आई वुड बी रादर बिजी टुडे. रादर बिजी मीन थोड़ा सा बिजी हूँ, आज मैं थोड़ा मसरूफ़ होऊंगा तो आज नहीं. नेक्स्ट probably tomorrow I will have some time. Probably means शायद या गालिबन. गालिबन कल मेरे पास कुछ वक्त होगा. Tomorrow is आने वाला कल और yesterday होता है गुजरा हुआ कल. After that in answer you can say okay let's plan to take an adventure. अब एडवेंचर लेने का मीन यहाँ पर होगा सैर के लिए जाना. आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं सैर के लिए. जैसे आप कहना चाहते हैं किसी सैर पे चलते हैं तो यू कैन से लेट्स गो फॉर एन एडवेंचर. तो ठीक है, चलो कहीं सैर पे जाने का प्लान बनाते हैं. Likewise, to continue your conversation, you can say, "Oh, how goof I am." Goof means foolish or बेवकूफ़. मैं कितना बेवकूफ़ हूँ. ये phrase you can also use in your sentence when you say want to say you are a foolish person. Why, what's the issue? क्या मामला है, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं what happened. I had to catch a taxi now. मुझे अभी एक टैक्सी लेना थी. Had to is used for the things when you want to say that ये काम मुझे मजबूरी में करना पड़ा या मुझे ये काम करना पड़ा था. Then you use had to first form of the verb. Oh, talk to you later. Okay, आपसे बाद में बात होगी. So this can be the ending of your conversation.